Welcome to another live. Just trying to create a thumbnail or something using ChatGPT. It asked me to log in and all, and now it is not working somehow. It's trying to generate the thumbnail and all. Let's see. Trying to get the thumbnail, and then we'll start by creating some AI agent. Not sure what can we do about that. Let me ask ChatGPT only. Create API, you will generally need to set up an account. Run model locally using so if I have to run llama locally, I can maybe for now continue with ChatGPT, and later on I can go with llama. So I got my thumbnail design ready. I got a notification on my phone saying thumbnail is ready, but apparently it is not. But if I refresh it, maybe then might give me. Oh, that's a nice one. Nice thumbnail it has created for me.
Let's see. Let me see which one is it. Don't want to open the wrong one. Oh, 07. This one probably. Yep. The dimensions are wrong, man. Badly wrong. Yes, that's fine for now, I think. Title design 1. Title design 111. Where is that? Here. Fair enough. Cool. Let's see about AIs and what we can build up here. So see, in the main function, let me just read a little bit about the architecture. Need to see for the architecture or something. So actually I'll use ChatGPT only for this one. With the chant. Actually, I'm not pretty sure about using OpenAI. I think if there was something better that we could be using, that might work. Let's see some AI agents which are already there and see how they have built stuff around. Actually, when we have the assistant over here, let's try basic first. I think I took a bigger leap right now rather than taking a basic leap. So the main function is here. I've removed everything like memory, etc. Let me just see where the code for me is.
Personal cd, I think it's my copy bot, right? So I'm not able to find this code in the repository. So cd of copy bot. Can you increase that, and then python 3 main.py. Oh, source v create bin activate. Okay, python 3 main.py. Let's see if this works or not. So over here I'm initializing some stuff, but I don't really want them. We have LLM brain over here with some maximum token something. It should be printing LLM brain exit whatever. Then it'll process with the LLM brain.chat. .chat is over here. So messages it will copy, it will get a response from here, and then it will return the output. Let's see if and when this whole thing works. What's the process there? So it started by how can I help you? I can do tell me the flavors of ice cream available. So the initial setup that I'm having is basically the init function. I have a main over here which will record my history. Then I'll do a chat, and when my conversation history is greater than 10, I'll try to remove some. So I went to ChatGPT. Also, as part of this, I'll also try to add somewhere here, let's say print conversation history, and then I want to print out the conversation history. So let me stop this thing. Let me start the bot again. Let's see. Our conversation history is empty right now. So what I can do is tell me the flavors of ice cream available. So these are the flavors that it gave. I like cookie butter, let's say. Let's see how does it process when I send it basically two messages.
Takes a lot of time. That is irritating, a little bit irritating. And if it times out now, then I'll be very much irritated. Okay, cookie butter is a delicious blah blah blah. Okay, can you derive one sentence back from my last conversation with you? Let's see if it can derive a one sentence fact. Then maybe we have a hope somewhere. Okay, it give you enjoy cookie butter ice cream and might also be little flavors such as caramel. Okay, so my basic conversation is working. Now let me try to make a system in which I'm able to store these value in a chatbot. I'll just come in a while. Sorry, I'm back now. Come on, where's that gone? Okay, so the basic of okay, so the basic is done, I think. I want to record this conversation in the SQLite memory now. So I have a memory component of SQLite memory.python which will store the message with some embedding. So I don't want such a big interface right now. These methods I'll create later. Don't want them right now. Over here, some things I really don't want, which is like this fact generation and all. These I don't want. So basically the one method, so let's start with the very first thing, right? Embedding model, I'm using sentence transformer right now.
Maybe we don't require it as much. Why is my... Come on, man. Okay, now it's better. So this is here, but that's all right. Okay, all right, we got this thing from here. Let's see about SQLite memory, what we can do of that. Let me put on some music, man. Like, this is really boring coding on your own, but I'll put on some music. Even if I get copyrighted, who cares? We can get copyrighted, who gives a crap? I'll start the music because I'm getting bored now. Let me start. Okay, okay.
Mm. Sentence similarity is one thing, but I don't think we really need that. Deep learning is so straightforward. This is so difficult, like rocket science. I can't believe how much I struggled. So I can get the similarity between two sentences. Will sentence similarity be used to find let's ask it what is sentence similarity doing here. I don't really need this embedding model. I'll just try comment it out for now. Okay. I don't really want embedding and all right now. I'll increase this model later if I want to. I'm removing it for now. I want session ID, role. Serves a crucial role in building a more intelligent memory retrieval system. Let me explain what it's doing wrong. Vector embedding for text representation. Your code uses the K. Storing a message in your database. You're also storing its vector representation. This we'll use later. I think short-term memory is fine, and this is facts table in which we can store some facts. So confidence score, I don't know if we require this. We'll see why and how we can use this, but for now I'll use this later. I think I don't want the confidence scores. So what I want is basically one table which will store my messages and my other table which will store facts. So store a message would not be using embedding, right? It will execute, it won't use embedding tool. I'll remove it. I'll remove the question mark as well. I'll remove embedding also from here. Don't need embedding right now. Short-term memory dot append. You'll store a message, you'll append this in short-term memory. Stored content, if memory is greater than 10, then pop. Okay, this is where store message is working, and then retrieve messages, search by similarity and get facts. Store fact. These four methods I will comment out for now. I just want to store my message, that's it. I don't want anything out of it. I don't want to store any fact, anything basically. So in my brain what I'll do is it will initialize with memory system, max, token and whatnot. Over here in the chat column I'll take the response and I was returning the response out. Okay, so instead of that, since my LLM brain is here, my main.py is here, so I was using this chat component up here, and conversation history it will append, and it will append as user as well. So this conversation history is something which should be there, right? So in LLM brain what I can do is in the chat column, so augmented messages would be basically all the message which are coming from there. One thing that I can do is store message in memory.
actually what I want to do is, for a session ID, role I don't require, man. This session ID basically means that one user who's working, right? Does not mean that there are multiple users out there. I can maybe make this model for one user right now, because in one session, it does not matter in one session what all you give it. You somehow want to use every session in this. So where's the other part gone? I commented out some stuff, right? Did I delete that? No, it's here. Okay. Store messages here. LLM brain, what it is doing when we are chatting, it is working like this. Main. So instead of storing it here, yeah, maybe we have to store it here only. Okay, so in the chat column for a particular session ID, so this session will be a to and fro column, and every session can have some facts with it. So in this session I can append the most recent message. So store message should be the most recent message up here, right? Since in the LLM brain I would be having all the messages here because I want to send all my messages up here. It only makes sense in this weather. What the hell is going on? It only makes sense to store the last two messages, because I believe last two messages would be the one which I sent. So I can pick the last two messages. You can just ask the agent only. Right here, code to pick the last two messages. And in here I can insert into session ID role content. In the content I can give the message, role would be the role, and session ID will be the current session ID, right? Yep. So what the hell, man? I just asked for one line of code and it starts giving all this. I don't want this garbage. Just give me. This is stupid. How to get the last two elements in our list of Python. Let's see how to get the last two elements in a list of Python. Takes too much time. God damn it.
Can there be a case in which two messages are not processed? Like if history.append is user, it starts with the assistant one, which is like, how can I help you, sir? So I'll type a query and respond. So it's gonna be last two. So I can just give last two messages can be message minus two. One. So self wrote for message in last two message. What the hell is this, man? Self dot memory dot store message, and in this I can give yes. This sounds right. So I'll be storing my database messages up here, and I'll be getting the content. So this will be this agent memory.db. Let's see how can I visualize, how to visualize the local.db file created for SQLite database. See downloads browser in the device here basically. To get the content of SQLite database in Visual Studio, because I want to see what data it is generating. So for that reason I want the values to come. So coding SQLite database in Visual Studio Code. To view the content of SQLite database in Visual Studio Code, you have several options. SQLite extension by, let's see this extension. Okay, there are a lot of downloads in this. I think I can trust it. I'm not sure, I don't have any reason not to. And can I see my database now? What?
command palette, which will be Control Shift P, Command Shift P, okay, and SQLite, and database, agent memory, view tables in the Explorer sidebar. You'll see a SQLite Explorer. I don't know if I can see this one. Hi Chirag, hey man, sorry, I messed up bad. The Explorer sidebar, you'll see open database. I can give a bit of context, man. Like, it's a really basic app. So what we are trying to build is that AI agent only, and we'll just see how to build that. I don't know if you know Python or not, but all these things are garbage right now, so you can ignore these things. It's not getting used, it's just the dummy code created by AI. This is the basic program in which it'll say welcome to LLM brain and type exit to quit or something. So what is happening is we are trying to interact with the APIs of OpenAI, Azure OpenAI, and what we are trying to do is we are trying to record our conversation, because the API works in a way that you can send a message and you can receive the response, but for the next message you have to store them. Otherwise मतलब उस एजेंट को पता नहीं लगता है कि आपने यूज़ किया है कुछ भी, मतलब इंटरेक्ट करने के लिए. तो इसलिए हमें कन्वर्सेशन हिस्ट्री स्टोर करनी पड़ेगी, और LLM ब्रेन के साथ हम चैट कर रहे हैं. तो ये एक मेथड बनाया हुआ है ब्रेन के अंदर, एक ही मेथड है बस. तो ये चैट मेथड क्या करता है, इनिशियलाइज करता है LLM ब्रेन को, सेशन आईडी वगैरह देता है, जो भी बकवास है वो. हाई ट्रैवल, व्हाट्सअप मैन. थोड़ा सा पीछे से देख लेना, कॉन्टेक्स्ट देना स्टार्ट किया था मैंने. तो सेशन आईडी वगैरह स्टोर कर लेता है, और उसके बाद मैसेजेस जो भी यहाँ पे मैसेज आए हैं, बेसिकली मेन से जो भी मैंने कन्वर्सेशन हिस्ट्री दी है, वो सारे मैसेजेस यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पे डाल देता है. तो ऑब्वियसली मतलब हम एक मैसेज भेजेंगे और एक हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा असिस्टेंट का. हमें दोनों स्टोर कराने हैं अपने हिस्ट्री के अंदर. तो हम दोनों को यहाँ से LLM ब्रेन में लास्ट के 2 मैसेज निकाल कर उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, और फिर रिस्पॉन्स जो है वो लेके मतलब रिटर्न कर देंगे. सो इट्स लाइक जब पहली बार कोड चलेगा तो यूज़र कुछ क्वेरी डालेगा, वो क्वेरीज तो दिस इज़ रॉन्ग आई थिंक, क्योंकि पहली बार जब चलेगा आई एम सर्चिंग फॉर AI API विच इज़ लो इन कॉस्ट बिकॉज OpenAI फ्री टियर इज़ नॉट इनफ. आई नो मैन. लामा से ट्राई करना चाहा था मैंने, लामा रन लोकली, तो लामा वाला कर देगा आई थिंक. तो ये एजेंट होगा. डीप सीक को बेसिकली या मेटा लामा इज़ गुड, क्योंकि डीप सीक में भी यही होता है कि डीप सीक का मॉडल तुम यूज़ करके उसको लोकली रन कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे लामा API वेट लिस्ट चल रही है आई थिंक इनकी, बट आई थिंक देर इज़ अ वीडियो ऑलरेडी ऑन यूट्यूब जो ये चीज़ करके दिखा रही है. दिस वन सॉर्ट ऑफ llama and DeepSeek. So this ये वाली थी शायद. इसके अंदर they are telling कि how you can run it locally. So this one I tried actually. I tried it. I thought, yeah, see, I have already seen this. तो इसके अंदर I thought कि I'll create 2 local AIs and I'll make them fight. But AI थोड़ा ब्लॉक करता है. रफली कितना साइज़ होगा, बिकॉज चेकड फॉर DeepSeek एक API कॉल में सिस्टम रैम 90% यूज़ हो रही है. छोटे वाला यूज़ कर लो, जितना MB बड़ा मॉडल लोगे उतना ख़राब होगा. जैसे कि अगर और बाकी मॉडल्स भी होते हैं, सिर्फ DeepSeek यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. आई थिंक बाकी कुछ मॉडल्स भी हैं जो यू कैन यूज़ फॉर फ्री.
ये वाला पता नहीं मेरे को, एक बार डीप सीख के देखता हूँ। कल रात को जो लाइव स्ट्रीम करेंगे उसके अंदर कर सकते हैं हम। मैं दूसरे वाले लैपटॉप से आ सकता हूँ एंड वी कैन लोकली रन llama. Can we run this on any VM? Oh, you are concerned about security and all. वही मैं हूँ, इसीलिए मैं इस पे रन नहीं करना चाह रहा जिस पे मैं अभी हूँ। तो वही इशू मेरे साथ भी है मैन। आई डोंट वांट टू रन इन इट ऑन दिस लैपटॉप। सिक्योरिटी का हाँ थोड़ा इशू हो सकता है, बाकी लो कॉस्ट APIs तो यार बाकी उसकी है। ग्रुप देख लो एक बार, GROK कॉस्ट API प्राइसिंग क्या है इसकी। आई नो मैन, मतलब मैं इस लैपटॉप पे इसीलिए रन नहीं करना चाह रहा क्योंकि आई डोंट नो मैन, लगता है ऐसे। $3 पर फ्री कहाँ पर है इसका? फ्री क्रेडिट्स देखते हैं। $150 दे रहा है ये API फ्री क्रेडिट्स। मल्टीपल यूज़ कर लो, एक एब्स्ट्रैक्शन बना लो या तो मल्टीपल मॉडल्स यूज़ कर लो और देख लो उसमें। $150 तो आई थिंक सही होना चाहिए। $3 पे 1 मिलियन टोकन है कुछ, तो $3 पर 1 मिलियन टोकन है इनपुट, और आउटपुट $15 पर 1 मिलियन है शायद। तो ठीक है, और मिनी बेटा तो और इजी है। तो अगर जहाँ पर भी तुम्हें ये तो इवन बेटर है आई थिंक, तो ये वाला यूज़ कर लेना अगर करना है तो। आई डोंट नो, ट्राई। हाँ, आई थॉट अबाउट विल क्रिएट 5 IDs एंड ऐड कंडीशन। हाँ वो कर सकते, बाकी ये देख लो यार। इसमें एक दिक्कत हो गई, इसमें ये हो गया कि मैं कन्वर्सेशन हिस्ट्री यहाँ से भेज रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम में जो मैं क्वेरी डालूँगा बस वही आएगा, और हिस्ट्री के अंदर 2 एलिमेंट होंगे नहीं लास्ट के, क्योंकि मैंने चैट में डाला हुआ है वो llmbrain.chat। तो मैं एक काम करता हूँ, LLM ब्रेन के अंदर चैट की जगह मैं एक अलग कर देता हूँ, मेथड बना लेता हूँ, विच इज़ async define store messages। तो सेल्फ जाएगा, सेशन ID जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, और मैसेजेस जाएगा ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली इस मेथड से हटा रहा हूँ मैं लास्ट 2 मैसेजेस एंड ऑल। ये मैं इसमें से हटाकर इसमें डालना चाहता हूँ स्टोर मैसेज में। तो इसको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, स्टोर मैसेजेस इन द मेमोरी सिस्टम। तो इसके अंदर ये सेम चीज़ बस मेरे को डालनी है। और यहाँ पर मैसेजेस नहीं करूँगा मैं। सो फॉर मैसेज इन मैसेज, ठीक है। लास्ट 2 मैसेज की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मेथड को एक ही काम करना है, विच इज़ टू स्टोर द मैसेज इन मेमोरी। तो सिर्फ उस चीज़ के लिए यूज़ हो गए, नथिंग एल्स। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, लास्ट 2 नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, ऑटो कंप्लीट देखो यार कितना ख़राब है, मतलब आई डोंट नो। तो यहाँ पर जो मेन मेथड मेरा होगा उसमें मेरी कन्वर्सेशन में मैं कुछ मैसेज भेजूँगा, ब्रेन से चैट करेगा, तो ब्रेन के चैट में है कि OpenAI से रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा वो, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आके मैं कन्वर्सेशन अपेंड करूँगा, और यहाँ पर मैं सही है, अवेट LLM brain डॉट स्टोर मैसेजेस, सेशन ID, कन्वर्सेशन हिस्ट्री नहीं चाहिए मेरे को, उसके लास्ट के 2 मैसेज चाहिए। तो वो मैं ऐसे भेज दूँगा, लास्ट के 2 मैसेज। ठीक है, लास्ट के 2 मैसेज यहाँ से हो जाएगा। तो उसके बाद इसको देखना है बेसिकली मेरे को। आई डोंट नो इसको ओपन कैसे करूँ मैं, क्योंकि मेरे को डेटाबेस SQLite का है, इसको खोलना है। ये रहा SQLite एक्सप्लोरर। ओके, यहाँ से देख सकता हूँ मैसेजेस की टेबल ये है। तो अगर मैं इसको, ओह नाइस, आई कैन सी दिस, गुड गुड गुड। तो एक काम करता हूँ, इस डेटाबेस को अभी करते हैं डिलीट, क्योंकि मैंने मॉडल्स वगैरह चेंज करें। तो इसको कर देते हैं डिलीट, दोबारा देखेंगे। आई डोंट यूज़ Copilot एट ऑल इन BS। मैन, करना तो मैं भी नहीं चाहता, बट अब टाइम वो आ गया है कि करना पड़ेगा यार।
can't do anything. Every company wants कि how good you can prompt, so I don't know. इसको बंद करते हैं, ठीक है. अभी हमारे पास नहीं है डेटाबेस की फाइल, राइट. लेट्स स्टार्ट विद पाइथन 3. डेटाबेस की फाइल बनने दो एंड देन लेट्स ट्राई सम क्वेरीज कि क्या चलता है इसमें. बाय द वे यूट्यूब का भी अलग है, ये बहुत टाइम लेता है यार. एजेंट वगैरह जो भी इनिशियलाइज, अभी तक तो डेटाबेस भी नहीं बना, पता नहीं क्या दिक्कत है. और अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये डमी कन्वर्सेशन ले लेगा मेरी. सी क्या दिक्कत है. गेट फैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्टेड मेथड्स नहीं है. ओके, मेमोरी इंटरफेस में मैंने इतने सारे मेथड्स बना दिए, कोई फ़ायदा ही नहीं. इनको सब घटिया बनाया है इसने, चैट जीपीटी ने. सबको कमेंट करना पड़ेगा. यो ब्रो, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग करियर? आई नो यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, बट इफ़ यू कैन. अरे भाई पूछो ना, क्या दिक्कत है भाई पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. ये तो मैं पैरेलली कर सकता हूँ डेव वाला. इसमें तो इस चैनल पे तो जितने पूछने हो क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. डेव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, मतलब मेरा एटलीस्ट नहीं लगता. मैं कॉन्टेक्स्ट बड़े आराम से स्टोर कर पाता हूँ. पूछ लो. हाउ कैन आई हेल्प यू सर? ओके, टेल मी सम फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी इफ़ माई एजेंट इज़ एबल टू स्टोर दिस रिस्पॉन्स और नॉट. बेसिकली मेरा अगर ये एजेंट मेमोरी वाला जो ये टेबल है ये स्टोर कर पाता है कि नहीं. तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया ये. ऑल्सो मैंने कैप लगाई हुई है मैक्स टोकन्स, तो मैं ज़्यादा टोकन नहीं लगा रहा क्योंकि ये बड़े बड़े रिस्पॉन्स देता है अदरवाइज़. तो मैं इसके अंदर छोटा ही कर रहा हूँ. तो इसने मेरे को बता दिया फ्लेवर्स बहुत सारे हैं. आई लाइक ब्लैकबेरी, ब्लैक रास्पबेरी. तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स देता है. आर यू रनिंग लोकली और AI API? अब मेरे पास API है यार माइक्रोसॉफ्ट, तो फ्री APIs मिल जाती हैं मेरे को. तो मेरे में तो API चल रही है यार. बट कल से एंड से मैं, अरे भाई बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई. कश्यप भाई पूछ लो यार क्वेश्चन, वेट कर रहा हूँ मैं. कल से एंड से मैं भाई बेस्ट ऑफ लक यार. आई होप फोड़ दो. DSL तुम्हारा बढ़िया है, होप अच्छी कंपनी में मिल जाए तुम्हें. तो इसने मेरे को बता दिया ब्लैकबेरी रास्पबेरी इज़ अ फैंटास्टिक चॉइस वट एवर. लेट्स सी एजेंट वाले में क्या सीन है. ओके, शो मी. तो इसने 3-4 मैसेज मेरे यूज़ करे हैं, तो इसको यहीं पे कर दो ना भाई. बैच मॉनिटरिंग की जॉब मिली है कंपनी से, ये बोला है कि नहीं किया तो आई विल बी आउट. DSA और डेव दोनों ही बहुत बेसिक आता है. 2 साल का बॉन्ड है और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है. अब क्या करूं? देख भाई, बैच मॉनिटरिंग थोड़ा सा एलेबरेट कर देगा प्लीज़ यार. मेरा काम आसान हो जाएगा उसमें. बैच मॉनिटरिंग मेरे को पता नहीं है यार, बट मेरे पास एडवाइस तो है इसके लिए. क्या कर. ओके, अगर यही है तो मत लिखना, मतलब मैं समझ गया. बस यस नो लिख देना. आई नो तेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है. देख यार, तेरा 2 साल का बॉन्ड है. मेरा भी एक दोस्त था, ठीक है, उसका भाई मतलब बहुत ही भयंकर डेव था. उसने फेक ट्वीट करके एक एप्लीकेशन वगैरह बनाई थी जिससे 75-80,000 वगैरह अर्न कर रहा था. उसके साथ भी यही दिक्कत थी. उसकी जो कंपनी थी उसमें 2 साल का बॉन्ड था, ठीक है. वर्क लाइफ प्रेशर बहुत ज़्यादा था. अब देख, बात वही होती है कि तेरा DSA अभी बेसिक है तो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. मतलब इसको नेगेटिवली अगर ना देखे तो अपॉर्चुनिटी है. तो थोड़े टाइम लगा कर, मतलब अगर तेरे बैच मॉनिटरिंग में ज़्यादा टॉक्सिक नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है, तो मतलब तू ये मत सोच कि तेरे करियर में तू कुछ सीख नहीं पा रहा डेव से रिलेटेड. तो ये सोच कि तेरे पास 2 साल का एक्चुअल कंडीशन मिली है जिसके अंदर यू कैन लाइक गेट आउट ऑफ दैट हेल. तो उसको यूज़ करके तुम DSA कर लो पैरेलली और डेव कर लो और अप्लाई करते रहो. क्योंकि देखो प्रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा, सिंस तुमने ही बोला है कि बहुत बेसिक आता है. वही बात होती है ना यार, अगर काम ठीक ठीक चल रहा होता है तो फिर ऐसा रियलाइज़ नहीं होता है कि निकलना भी है इस जगह से. बट जब काम ख़राब होता है तब रियलाइज़ होता है कि ओके अब बहुत ज़्यादा घटिया चल रहा है, अब यहाँ से निकल लेते हैं.
तो आई थिंक वही चीज़ है तुम्हारे साथ यार। थोड़ा वर्क प्रेशर का बता दो, अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो आई गेट इट भाई। तो ऑल्सो वर्क प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, मतलब अगर तुम्हें छोड़नी है वो चीज़, तो लेट मी आस्क माई कंपनी सीनियर डेव, मे बी आई कैन ऑल्सो गेट ओपन ए। नाइस भाई, पूछ लो हाँ। यार देख फिर वही बात है, अगर तू काम नहीं करता है तो फिर वही बात है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब है, तो उस केस में तो यार वही है कि तुम्हें तेरे को थोड़ा सा हसल वगैरह करना पड़ेगा यार 2 साल। और फिर यार मेरी तो एडवाइस यही है, देख ये 2 साल डीएस से ग्राइंड कर ले, क्योंकि बेसिक ही आता है ना, साथ साथ में हो पाएगा। थोड़ा गर्लफ्रेंड वगैरह को बोल दे यार कि थोड़े टाइम ग्राइंड करूँगा, प्लीज़ हेल्प करना, तो वो भी मोटिवेट कर देगी, तो हो जाएगा यार। टेक मत पकड़ भाई कोई भी, मतलब मैं तेरे को फैक्ट बता रहा हूँ यार, तू कोई भी टेक पकड़ ले, मान पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले। डेव मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेव अगर तू करेगा ना, देख डेव के अंदर देख तेरे को 2 प्रोजेक्ट चाहिए होंगे। पहले अपना डीएस से सुधार यार, बिना डीएसए के देख कुछ नहीं लगता यहाँ पे, सब किसी को पता है। अब इवेंचुअली अगर आने वाले सालों में ख़त्म हो जाए तो पता नहीं, बट अभी के लिए क्लियर यही है, चाहे कितनी चीटिंग हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए ओपन एआई से, डेव नहीं पूछते, डीएसए ही पूछते हैं। तो अगर तू डेव के अराउंड भागेगा तो यार थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बस वो देख लेना यार थोड़ा। टेक मत पकड़ यार कोई भी, मतलब वो करके देख, गो फॉर बेसिक क्लैरिटी एंड डीएसए एंड वन लैंग्वेज लाइक जेएस। हाँ वही जावास्क्रिप्ट टाइप का कुछ कर, जिससे कि तेरे को थोड़ा सा मतलब बढ़िया हो जाए। उसके बाद 4.5 लाख LPA का पैकेज है एंड डबल डिजिट में लाना पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, पॉसिबल ही पॉसिबल है, तू टेंशन क्यों लेता है यार, आ जाएगा। बस ग्राइंड करना पड़ेगा, ये जो 2 साल है उसको पेलना पड़ेगा, उसमें वो हो गया तो हो जाएगा। ओके तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, रिस्पॉन्स मेरा डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा है। अब मेरे को इसमें अगला फैक्ट लगाना है। बेसिकली मेरे को जो भी मेरे मैसेजेस स्टोर होते हैं एक सेशन आईडी वगैरह पे, मेरे पास 2 चीज़ है यार, या तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोर कराता हूँ वैसे ही उन 2 मैसेजेस से फैक्ट निकाल के वो स्टोर करा लूँ, ठीक है, या फिर सी व्हाट आई वांट इज़ कि एक सेशन आईडी के लिए एक ही फैक्ट हो। नो वरीज मैन, बट यार आई रियली विश कि तेरा थोड़ा ठीक हो जाए भाई। एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी है यार, हेल्प कर देगी। अभी तक मतलब स्ट्रीम में जितने भी बंदे हैं काफ़ी सपोर्टिव है यार, एंड आई रियली लाइक दैट। ये मतलब पूछ सकता है यार तू यहाँ पे कुछ भी, सब लोग हेल्प कर देते हैं। ब्रो आई ऑल्सो हैड द सेम कंडीशन बिफोर कोविड, आई ग्राइंडेड डेव फॉर 1 ईयर। ओ स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, हाँ ये अदर वे अराउंड है, बट यार मतलब ग्राइंड फिर उसमें ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब ट्रैवल प्लस अगर तुम्हें डीएस से करना होता है या फिर डेव करना होता है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा इजी होता है? मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई करी है यार, मेरे को कभी गिग्स ही नहीं मिलती, तो पता नहीं यार, मतलब आई एम बीइंग ओपन इन दैट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट, सच बताऊँ तो डेव में मज़ा आता है, वही बात है यार, मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ अभी, मेरा अनवाइंड टाइम है बेसिकली ये। मतलब मेरे को इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं लग रहा, मेरे को करना है, ये करना है, वो करना है, और यहाँ पे मस्त चैट भी कर सकते हैं साथ साथ में। मतलब अब जैसे कि ये स्टोर मैसेज हो गया, अब इसके बाद इसमें मेरे को ये चाहिए कि मैं फैक्ट रिट्रीव कर पाऊँ जितने भी मैसेजेस हैं उनसे। तो बेसिकली मेरा एल्गोरिदम इसमें ये रहेगा कि अगर जैसे ही फैक्ट हमारे 20 होते हैं या फिर हमारा सेशन क्लोज होता है, दोनों में फ़ैक्ट रिट्रीव करके हम स्टोर कर लें। द थिंग इज़ कि ये 2 साल जो एक्सपीरियंस दिखेगा वो जस्टिफाई कैसे करूँगा कि क्या किया प्रीवियस कंपनी में, इशू है ये। भाई हरदम नहीं पूछते यार ये चीज़, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब हरदम ऐसा नहीं होता कि तेरे को हरदम जस्टिफाई करना पड़ता है। देख मैं भी सी शार्प पे काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, एट द एंड अगर दूसरी कंपनी में जाके मेरे को कोई ये बोलता है कि भाई मतलब तूने सी शार्प पे काम किया, हम तो जावा पे करते हैं, जस्टिफाई मैं भी नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी इतनी टेंशन मत ले भाई।
बस कंसिस्टेंट वगैरह रहे, डीएसए वगैरह कर, एट द एंड सबको भुलाने के लिए रेडी होता है कि 2 साल ख़राब कंपनी में हो। देख काफ़ी लोग मतलब सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड में भी जाते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड वाला उनको ये थोड़ी पूछता है कि तुमने सर्विस बेस्ड में क्या किया, मतलब थोड़ा सा अलग वो है ना, मतलब ऑफरिंग दोनों की अलग होती है। या फिर जब एक प्रोडक्ट बेस्ड वाला किसी फाइनेंशियल फर्म में जाता है, जैसे ट्रेडिंग फर्म वगैरह में जाता है जहाँ पर वो काम करता है, तो वो लोग भी नहीं पूछते उससे कि भाई तूने प्रोडक्ट बेस्ड में जो काम किया है हमारे यहाँ तो काफ़ी कम लगेगा। वो रख लेते हैं बेस्ड ऑन उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, अगर तुम वो पास कर रहे हो तो। अभी तेरे को 2 साल होंगे, तेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन और थोड़ा बहुत डेव, उसमें अच्छा रहे और हो जाएगा क्लियर बड़े आराम से। तू प्रोजेक्ट कोई भी बना ले यार टेक का, जावा सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि मेजर कंपनीज पूछ रही हैं जावा, और जावा को थोड़ी हैवी वेटेज दी जाती है। बट आई विल सजेस्ट कि डीएसए कर ले, क्योंकि डीएसए हर कंपनी में ही पूछा जाता है और उसके बिना जॉब स्विच नहीं होती। देख ट्रैवल प्लस भी सेम चीज़ ही बोल रहा है, बट आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट इन लीड कोड सो दैट आई कैन आंसर एनी इंटरनल प्रोजेक्ट इंटरव्यू और अदर इंटरव्यू। या दैट्स द थिंग मैन, स्टार्ट स्लोली, गेट्स विल ओपन ब्रदर, अभी मार्केट इज़ बैड फॉर जॉब्स। ट्रू भाई, ट्रैवल प्लस इज़ रियली नाइस मोटिवेटर, बिग कूडोज भाई। स्टार्ट कर भाई, टेंशन मत ले ज़्यादा, स्टार्ट कर। डीएसए भी करते हैं हम 3 to 5, साथ करना है साथ कर ले, बाकी मर्ज़ी है तेरी। और डेव भी शाम को मैंने सोचा इसी टाइम करेंगे, 9 to 10 या 10:30। आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा, अभी मतलब थोड़ी देर में जाऊँगा क्योंकि आज स्ट्रीम मैंने थोड़ी फकअप कर दी। कल से आई एम प्रिटी श्योर कि हम एआई एजेंट बढ़िया से बनाएंगे यार, डेली का 1.5 घंटा, मतलब आई विल पिंग ऑन डिस्कॉर्ड ऑल्सो। कल डीएसए वाली स्ट्रीम नहीं कर रहे, बट ये वाली स्ट्रीम तो पक्का करूँगा मैं। तो आई थिंक मैं रेगुलर ही करूँगा इसको, 9 से 10 एटलीस्ट, 10:30 11 जो भी होता है वो देखेंगे। तो अगर करना है भाई ज्वाइन, इस कंपनी में सी शार्प पे भी काम किया, देन माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 पे भी काम अच्छा चल रहा था, बट दे मूव्ड मी टू बैच मॉनिटरिंग। कोई बात नहीं यार, देख लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड, कुछ खास नहीं कर सकते यार। My brother shifted from biotech field because there were no jobs. He is now working as React Dev in startup as intern. Nice भाई, स्लो प्रोग्रेस होती है भाई ऐसे, मतलब डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फेक इन्फ्लुएंसर्स। मतलब ट्रस्ट मी भाई, जिसको गूगल, जिसको माइक्रोसॉफ्ट, जिसको जहाँ भी मिला है, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि उनको नहीं मिलता, ठीक है। उनमें कुछ अलग नहीं है जो तेरे में नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं ही बोल रहा हूँ। हो जाएगा आराम से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं करोड़ कमा रहे हैं, अभी बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं कंपनी की तरफ से, यूएस वगैरह। दे स्टार्टेड एट 6 LPA, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके टाइम पे एक्सपीडिया नहीं, एक कंपनी ने उसको दिया था 6 लाख से उसने स्टार्ट किया, आज वो 1 करोड़ कमा रहा है, मेरे से 3 या 3.5 साल बड़ा है बस। तो जहाँ से तुम स्टार्ट करते हो उससे मैटर नहीं करता भाई, कैसे तुम अपस्केल करते हो उससे करता है। उस बंदे ने 3 या 4 कंपनी स्विच करी और अब कॉइन बेस में है। वरना कॉलेज खोलना पड़ेगा। हाँ भाई यही बात है, कॉलेज खोलना पड़ेगा वरना। चलो यार आज के लिए मतलब मैं बंद करता हूँ यहीं पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का करना है अभी। कल मैं आज यार प्राइवेट हो गई। येस देर आर मैनी फेक ऑडियंस एंड प्रमोशन, डोंट फॉल फॉर दैट, स्टे फोकस्ड। यप मैन, फुल्ली यार। माइक्रोसॉफ्ट वाला बंदा बोल रहा है देखो तुम्हें, मतलब मेरी जगह कोई और हो सकता था यहाँ पे। मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया, ज़्यादा डिमोटिवेट वगैरह मत हो, इट्स फाइन भाई। चलो यार आज के लिए मैं बंद करता हूँ, मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम करना है। कल से 9 से 10:30 अगर तुम लोग फ्री हो तो एआई एजेंट बनाएंगे। मेरे को भी सजेशंस चाहिए होंगे, तो डेव में अगर मज़ा आता है तो फिर भाई साथ करते हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी चीज़ें हैं जो चैट से पता लगती हैं, जैसे लैंग चेन वगैरह, मतलब ये सब भी पता लगा थोड़ा थोड़ा। तो कल अगर मैंने स्ट्रीम करी तो मैं उसमें भी बोल दूंगा, बट डीएसए की तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करूँगा, ये वाली 2 घंटे कर लूँगा मे बी। ठीक है भाई, लेट मी नो ऑफ लोकल एआई सेटअप। फुल स्टैक बेटर है यार मेरे हिसाब से। डेटा इंजीनियरिंग में मतलब तुम एआई से रिलेटेड ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो तुम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो मेरे को फुल स्टैक लगता है, क्योंकि एट द एंड फुल स्टैक वाला भी थोड़ा थोड़ा मतलब डेटा इंजीनियरिंग की हेल्प लेता है। दैट्स इट, डन सीन है भाई, थैंक यू भाई। चलो यार अभी के लिए चलता हूँ मैं, ठीक है गाइस, एंड थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
चलो डन है भाई, कल मैं पिंग कर दूंगा, डेली की करते हैं। चलो भाई बाय अभी के लिए तो।